Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Ania Imran, roll number 29, and I am here to present the assignment of Group 3. The topic that is assigned to us is factors affecting transport of gases from lungs to tissues and tissues to lungs. So let's start from gaseous exchange. We have already studied that exchange of gases between atmosphere and tissues or blood is one of the primary functions of respiratory system. And gaseous exchange is the process by which oxygen is transferred from the atmosphere to the bodily tissues for use in metabolism, and the gas produced by metabolism, the byproduct, carbon dioxide, it is transferred from tissues to the atmosphere. Oxygen transport. The oxygen delivery system in the body consists of number 1 the lungs and number 2 the cardiovascular system. Oxygen delivery to a particular tissue depends upon some factors. Number 1 the amount of oxygen that is entering into the lungs from the atmosphere, and number 2 the adequacy of pulmonary gas exchange. Okay, so this means that either sufficient oxygen is entering into the lungs or not. Number 3 the blood flow to the tissues, and number 4 lastly the capacity of the blood to carry oxygen. The amount of oxygen in the blood is determined by the amount of oxygen dissolved, the amount of hemoglobin in the blood, and the affinity of the hemoglobin of oxygen. So let's talk about a really important factor, that is hemoglobin. How hemoglobin is important? This topic is really going to define it. Hemoglobin is a protein made up of 4 subunits, and each of which contain a heme group attached to a polypeptide chain. The dynamics of reaction of hemoglobin and oxygen make it particularly a suitable oxygen carrier. We must have adequate amounts of hemoglobin in our body to survive, because hemoglobin transports most of the oxygen to tissues to meet the cell needs of energy. 5 liters of blood that is coming to the tissues must need to contain at least 250 milliliter oxygen, which is per minute. The hemoglobin molecules can also be represented as Hb4. It actually reacts with 4 molecules of oxygen to form Hb4O8, and this is the series of reactions that occur, and this is the product. BOHR'S effect. So what is BOHR'S effect? BOHR'S effect refers to the observation that increase in carbon dioxide's partial pressure of blood and decrease in blood pH, they both result in lower affinity of hemoglobin for oxygen. Okay, so as shown in this graph, x-axis is partial pressure of oxygen and y-axis is percentage saturation of hemoglobin with oxygen. So what is this term? This term, actually oxygen binding is expressed as percentage, and this percentage is known as percentage saturation of hemoglobin. Now this should be kept in mind that increased carbon dioxide level lowers the pH of blood, and vice versa. A lower pH causes hemoglobin to release more oxygen, while higher pH causes the hemoglobin to hold more oxygen. And this is how these curves are formed due to these factors. It is closely related to the fact that deoxygenated hemoglobin binds hydrogen ion more effectively than does oxygenated hemoglobin. The fate of carbon dioxide in blood. So now we are talking about carbon dioxide. The solubility of carbon dioxide in blood is about 20 times more than that of oxygen. Therefore, considerably more carbon dioxide than oxygen is present in simple solution at equal pressures. The carbon dioxide diffuses into red blood cells, is rapidly hydrated to carbonic acid. So what happens that dissolved carbon dioxide that is in the blood plasma, it diffuses into red blood cells where it can react with water. Reacting with water means that hydration reaction is occurring. So it reacts
In the presence of what? In the presence of carbonic anhydrate. To form what? To form H2CO3 or carbonic acid. Haldane effect. So, a very important point. Just notice that Haldane effect and BOHR'S effect are somehow related. Haldane effect is what happens to pH and carbon dioxide binding because of oxygen, while BOHR'S effect is what happens to oxygen binding because of carbon dioxide and lower pH. So because deoxyhemoglobin binds more hydrogen ion than oxyhemoglobin does and forms carboamino compounds more readily, binding of oxygen to hemoglobin reduces its affinity for carbon dioxide. So consequently, oxygenated blood has reduced now the affinity for carbon dioxide, and venous blood carries more carbon dioxide than arterial blood. So this is really important, that tissues facilitate in the uptake of carbon dioxide while lungs facilitate in the release of carbon dioxide. About 11% of the CO2 added to the blood in the systematic capillaries is carried to the lungs as carboamino carbon dioxide, which means that CO2 added to the blood is not pure carbon dioxide, and most of the carbon dioxide that enters red blood cells is converted to bicarbonate ions. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Shoaib. As my fellow Hania discussed about the topic of transport of gases from lungs to tissues and tissues to lungs, she discussed gaseous exchange, oxygen transport, reaction of hemoglobin, BOHR'S effect, carbon dioxide transport, Haldane effect, etc. Now I am starting from the topic of acidosis and alkalosis. Everybody knows that the normal pH of our arterial blood is almost 7.40. Now whenever there is a decrease in this pH, whenever there is a decrease in the pH below this normal level, this will be termed as acidosis. So अगर जैसे ही जो ब्लड प्लाज्मा है उसका जो प्रेशर pH है वो 7.40 से कम हो जाएगा तो हम उस कंडीशन को एसिडोसिस का नाम देंगे। और अगर किसी वजह से जो हमारा आर्टीरियल प्लाज्मा है उसका pH 7.40 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम उस कंडीशन को अल्कलोसिस का नाम देंगे। यानी कि अगर pH बेसिसिटी की तरफ जाएगा तो हम उसको अल्कलोसिस का नाम देंगे, और अगर एसिडिटी की तरफ आएगा तो हम उसको एसिडोसिस का नाम देंगे। और अब अगली स्लाइड में हम ये देखते हैं कि हाउ दिस कंडीशंस हैपन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यू पीपल नो डैट के जो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है ब्लड के अंदर वो होता है ऑलमोस्ट 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो अगर जो ब्लड प्लाज्मा है या ब्लड आर्टीरियल ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों वजूहात की वजह से जो ब्लड की पीएच है वो कम हो जाएगी। तो जब ब्लड की पीएच कम हो जाएगी तो हम उस कंडीशन को नाम देंगे रेस्पिरेटरी acidosis. So any short-term rise in arterial pressure of carbon dioxide concentration above 40 millimeter of mercury due to decreased ventilation result in respiratory acidosis. Decreased ventilation का मतलब है कि कम मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर निकलेगी तो वो अकोमोलेट होना शुरू हो जाएगी ब्लड के अंदर। सो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, फिर उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस काज करेगा। तो सिमिलर इज द केस ऑफ रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस। When there is a decreased concentration of carbon dioxide in blood, there will be a decreased partial pressure of carbon dioxide in blood. So तो अगर 35 मिलीमीटर मर्करी से कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा ब्लड में तो हम उस कंडीशन को नाम देंगे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। So any short term ventilation that lowers carbon dioxide pressure, carbon dioxide below what is needed for proper CO2 exchange, that is below 35 millimeter of mercury. So this is the same thing is explained in this graph. Next one is the factors affecting the oxygen delivery. These are the four factors which affect the oxygen delivery to body tissues and cells. First one is alteration in cardiac output. जब भी कार्डिक आउटपुट कम या ज़्यादा होगा तो वो हमारे ऑक्सीजन डिलीवरी को अफेक्ट करेगा। अगर कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, अगर कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा तो बॉडी को ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो जाएगी।
सेकेंड वन इज़ आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो हमारा आर्टीरियल ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो भी उसी तरह हमारे ऑक्सीजन डिलीवरी को अफेक्ट करेगी। थर्ड वन इज़ हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, जब जिसम में हेमोग्लोबिन कम या ज़्यादा होगा तो वो भी उसी तरह हमारे ऑक्सीजन डिलीवरी को अफेक्ट करेगी। द फोर्थ one is microcirculatory dysfunction. Microcirculatory dysfunction is basically means the disturbance of circulation of blood in blood vessels. ब्लड वेसल में जो अगर ब्लड में किसी तरह की डिस्टर्बेंस आएगी तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं माइक्रो सर्कुलेटरी डिस्फंक्शन, और इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं और उनमें से एक वजह है सेप्सिस। सेप्सिस बेसिकली इज़ अ कंडीशन in which the release of chemicals against infection in our body is out of balance, यानी कि जो हमारे जिस्म में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके नतीजे में जो हमारे जिस्म में केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं उन केमिकल्स की रिलीज़ अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आउट ऑफ बैलेंस हो जाए, तो उस कंडीशन को हम सेप्सिस का नाम देते हैं। सेप्सिस की एक एग्जांपल आप यहाँ स्लाइड में दी गई है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। व्हेनेवर देयर इज अ इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कंसंट्रेशन इट विल affect our body and it will cause disturbance in the auto-regulation of our body and it will also cause vascular decrease in vascular tone और vasodilation। अगर यानी कि अगर नाइट्रिक एसिड की जो रिलीज़ है बॉडी में वो नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगी वो या तो ऑटो रेगुलेशन में डिस्टर्बेंस काज करेगी और दूसरा वो हमारे जिस्म में वैजो डायलेशन काज करेगी, और जब वैजो डायलेशन हमारे जिस्म में काज करेगी तो वो हमारे जिस्म में हाइपोटेंशन यानी कि जो हमारा बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसको डिक्रीज़ करेगी। तो इस तरह वो हमारे जिस्म की जो नॉर्मल ऑक्सीजन डिलीवरी है उसको इफेक्ट करेगी। सो दीज आर द फोर factors which affect the oxygen delivery to our body tissues. So the next one is factors affecting oxygen consumption. The rate of oxygen consumption depends on the cellular metabolic demand and can be manipulated. So the जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कंजम्पशन है वो हमारी बॉडी की जो सेलुलर मेटाबॉलिक डिमांड्स है, सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उस पर डिपेंड करेगी। अगर सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई है तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, और अगर सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी लो है तो ऑक्सीजन कंजम्पशन बॉडी में कम हो जाएगी। The other factors which affect the consumption of oxygen is described in this slide. These all factors increase the consumption of oxygen in our body, and these four factors decrease the oxygen consumption in our body. First of all, exercise. Whenever exercise is discussed, there will be an increased cellular metabolic activity. So the same is case of trauma, inflammation, shivering, pain, agitation, and physiotherapy. Agitation basically refers to the state of confusion and nervousness. इन तमाम फैक्टर्स से जो हमारी सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से बॉडी की जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है उसमें इजाफा होगा। So these are factors which decrease the body oxygen consumption of body. First one is sedation. Sedation basically refers to the feeling of calm, relaxation, and sleep. So in this case, cellular metabolic activity is low, so there will be less oxygen consumed in body. Next one is hypovolemia. Hypovolemia basically refers to the decreased blood volume. In this case also there is a less oxygen consumption in body. Third one is mechanical ventilation. Mechanical ventilation basically is a condition in which we artificially ventilate the body using ventilators or other artificial machinery or devices. इस केस में भी बॉडी की जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो लो होगी। Fourth one is hypothermia. Hypothermia basically refers to a condition in which body temperature falls below normal point. Hypothermia basically disturbs many physiological systems of our body, including alterations in microcirculation and reduction of oxygen supply to our tissues. So these four factors decrease the oxygen consumption in our body. So in this slide, transport of gases from environment to lungs and from lungs to tissues is explained in detail. The whole process of gaseous exchange basically lies in the fact of difference of partial pressure of gases beyond two boundaries. You can see here that the partial pressure of air we inhale is almost about 760 millimeter of mercury, यानी कि एनवायरनमेंट से हम जो एयर इनहेल करते हैं उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ऑलमोस्ट 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी है। और अब जो
एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें जो ऑक्सीजन मौजूद है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो है ऑलमोस्ट 160 मिलीमीटर मरकरी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस एटमॉस्फेरिक एयर में या जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है ऑलमोस्ट 0.25 मिलीमीटर मरकरी। और इस जो एल्वोलाई है या जो लंग्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑलमोस्ट 100 मिलीमीटर मरकरी है और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑलमोस्ट 40 मिलीमीटर मरकरी है। तो इस डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर की वजह से जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स के अंदर इंटर होगी। फिर जो ब्लड आपको नज़र आ रही है, ब्लड वेसल नज़र आ रही है, जो कैपिलरीज नज़र आ रही हैं आपको, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर ऑलमोस्ट 100 मिलीमीटर मरकरी है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर ऑलमोस्ट 40 मिलीमीटर मरकरी है। सो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ आने वाली एयर का 160 है और यहाँ 100, सो ऑलमोस्ट 60 मिलीमीटर मरकरी का पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है। सो इस पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो ऑक्सीजन है वो इस एल्वोलाई से डिफ्यूज़ कर जाएगी इस ब्लड वेसल के अंदर, फिर इस ब्लड वेसल में होती हुई हार्ट में और फिर हार्ट से होती हुई बॉडी के तमाम टिश्यूज़ और सेल तक पहुंच जाएगी। आपको यहाँ याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है ब्लड के ज़रिए सेल्स और टिश्यू तक वो 2 स्टेट्स में ट्रांसफ़र हो रही है। यहाँ तो वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी और इन द स्टेट ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होगी, या फिर वो ब्लड में डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही होगी। ऑलमोस्ट 98% ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होगी और लेस देन 2% डिजोल्व फॉर्म एग्जिट करेगी ब्लड में। सो अब आते हैं सेलुलर लेवल पर। सेल लेवल पर क्या होगा, इस सेल के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है सेल के अंदर वो लेस देन 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो पार्शियल प्रेशर है सेल के अंदर वो ग्रेटर देन 46 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। और यहाँ से जो ब्लड सेल तक पहुँच रहा है उसके अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो ऑलमोस्ट 100 मिलीमीटर मरकरी और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। सो तो इस पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ इस ब्लड में से इस सेल के अंदर आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल के अंदर से मूव करती हुई इस ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस ब्लड वेसल के अंदर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर रही होती है वो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में कर रही होती है। यू कैन सी हियर ऑलमोस्ट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट and almost 20 to 23% it is bind with hemoglobin in the form of carb amino hemoglobin, and almost 7% of carbon dioxide is transported via blood in dissolved form. Now the partial pressure in this blood is almost, or venous blood is almost, जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के करीब है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर ऑलमोस्ट 46 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। सो अब यहाँ क्या होगा, लंग्स की तरफ आकर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है इस ब्लड वेसल में और जो लंग्स हैं उनमें है ऑलमोस्ट 40 मिलीमीटर, तो 6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है इस ब्लड वेसल में और लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड के। इसी पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड वेसल्स में से मूव करके इस एल्वोलाई में इंटर हो जाएगी और दैन जब एक्सपायरेशन होगी तो इस एल्वोलाई से आउट ऑफ द एनवायरनमेंट एक्सहेल्ड हो जाएगी जब हम एक्सपायर करेंगे। सो इन दिस वे पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो गैसेज हैं वो एनवायरनमेंट्स में से लंग्स में आती हैं और फिर लंग्स में से ब्लड में और फिर ब्लड में से सेल में और फिर से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सेल में से ब्लड वेसल्स में से आ जाएगी और ब्लड वेसल में से होती हुई एल्वोलाई में और फिर एल्वोलाई से आउट ऑफ द एनवायरनमेंट एक्सहेल्ड आउट हो जाएगी। सेम थिंग इज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। First of all, oxygen will enter from environment into lungs, then oxygen will enter into blood via alveolar capillary interface. It will enter from alveoli into these capillaries. Then oxygen is transported in two form, whether it is dissolved in plasma or bound to hemoglobin. You can see here that 98% hemoglobin के साथ बाइंड होगी और almost 2% जो होगी वो डिजोल्व फॉर्म में होगी ऑक्सीजन। दैन यहाँ पर आकर वो जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ इन हो जाएगी, विल डिफ्यूज़ इनटू सेल्स। पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन इस ब्लड में से इंटर हो जाएगी इस सेल के अंदर और इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल में से इस ब्लड वेसल में आ जाएगी और फिर इस ब्लड वेसल में होती हुई लंग्स की तरफ मूव करेगी और फिर इस ब्लड वेसल में से मूव करके एल्वोलाई के अंदर आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्ड आउट हो जाएगी ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। So
The next one is also diagrammatic explanation of blood gases transport. You can see here that the primary site of gases exchange are alveoli. Exchange of carbon dioxide and oxygen also happens between blood and tissues. It means that के gases exchange दो साइड पर एग्जिस्ट करिए. प्राइमरी साइड तो एल्वुलाई है जहाँ से ऑक्सीजन इंटर हो रही है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से इंटर हो रही है एल्वुलाई के अंदर. लेकिन टिश्यू लेवल पर भी गैस एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि ब्लड में से ऑक्सीजन डिफ्यूज करती है टिश्यूज में, सेल्स में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उन टिश्यूज में से मूव करती है ब्लड के अंदर. सो गैसेस एक्सचेंज एट दीज साइट्स हैपेंस बाय सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड ऑन अ कंसंट्रेशन or pressure gradient. To see in this diagram that due to difference of partial pressure, oxygen or carbon dioxide moves from lungs to blood and then from blood into cells. You can also see here that oxygen is transported from alveoli to capillaries and then from capillaries into blood plasma and then blood plasma to red blood cells, and then it will bind to hemoglobin and transported to the body tissues and cells. So the same thing is explained in this diagram also. Gases exchange is a process that occurs between oxygen and carbon dioxide. Oxygen is passed from lungs to the bloodstream and carbon dioxide is eliminated from bloodstream to the lungs. Exchange of gases takes place in lungs between alveoli and capillaries, which are tiny blood vessels placed at the walls of alveoli. A small amount of carbon dioxide is almost 5 to 7% is carried in the plasma as a dissolved gas. Almost 10 to 20% binds with hemoglobin in the form of hemoglobin, and the almost 70% of the carbon dioxide transport in the blood in the form of bicarbonates. So in the same thing is explained in this diagram, that how carbon dioxide is transported via blood. In plasma it is existing in dissolved form, or whether it is attached with the plasma proteins. And third, mainly it exists in the form of bicarbonates in plasma. In blood cells it is also dissolved form. It also exists in dissolved form, and it also forms a compound with hemoglobin and attached with hemoglobin and form carb aminohemoglobin. And mostly almost 70% of carbon dioxide exists in the form of bicarbonates ion in blood. So the next one is the removal of carbon dioxide by the lungs. Blood, you know that blood picks up oxygen in the lungs and carbon dioxide is released from blood into lungs alveoli. यानी कि जो alveoli हैं उसमें से ऑक्सीजन एंटर होगी ब्लड में से, उसमें लंग्स में से एंटर होगी ब्लड में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में से एंटर होगी लंग्स के अंदर. The respiratory movement of air in and out of the lungs carries the carbon dioxide to the atmosphere. यानी कि जब हम एक्सपायर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से आउट ऑफ द lungs expired हो जाएगी. Now the whole process of this alveolar gaseous exchange is affected by these three factors. The first one is O2 reaching the alveoli, the second one is gaseous diffusion between alveoli and blood, and the third and last one is adequate perfusion of alveoli. So we'll discuss them one by one. First one is O2 reaching the alveoli, यानी कि how much amount of oxygen is reaching to the alveoli. This affects the alveolar gas process of alveolar gaseous exchange. Now the O2 reaching the alveoli is again affected by two factors. First one is composition of inspired air, means how much and what is the composition of inspired air, how much oxygen is constituted in the atmospheric air. And second one is alveolar ventilation. Alveolar ventilation basically refers to the flow of air in and out of the alveoli, and this is affected by these three factors. First one is rate and depth of breathing, means that how many times and with how much intensity you are breathing in and out. And second one is the resistance of respiratory tract, and third one is the capacity or the compliance of lungs. The second factor which affects the process of alveolar gaseous exchange is gaseous diffusion between alveoli and blood, and this is further affected by two factors. Surface area, means the surface area of alveoli, and the diffusion distance. Diffusion distance means the distance between the fluid and the alveoli or the gas within alveoli, which again affected by the thickness. The thickness of barrier means the thickness of capillary plus the thickness of walls of alveoli is termed as thickness of that barrier. कि जो diffusion
डिस्टेंस है या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एल्विलाई और ब्लड के दरमियान, वो जो उस ब्लड और एयर के दरमियान जो वॉल है एल्विलाई की और जो कैपिलरीज की वॉल है उसकी थिकनेस पर डिपेंड करेगी। एंड देन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ये जो आप उस कैपिलरी के अंदर ब्लड है या जो फ्लूइड है उस पर भी वो डिफ्यूजन डिपेंड करेगी। एंड द लास्ट वन इज एडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ एल्विलाई। परफ्यूजन बेसिकली रेफर्स टू द फ्लो ऑफ ब्लड टू एल्वुलर कैपिलरीज, यानी कि जो एल्वुलर कैपिलरीज हैं उनकी तरफ जो ब्लड का फ्लो है वो भी इफेक्ट करेगा आपका जो एल्वुलर गैसेस एक्सचेंज का पूरा प्रोसेस है। So here our presentation ends. I hope that we tried our best to explain the topic. So thank you very much, sir, and Allah Hafiz.